हम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, कल तुर्की में सदारती इंतखाब के लिए इलेक्शन तुर्किया में सदारती इंतखाब के लिए इलेक्शन हुए, जिसमें रजब तैयब उर्दगान और कमाल किलिचदार रोगलू के दरमियान कांटे का मुकाबला हुआ और इंतखाबात को तुर्की की 100 साल तारीख का सख्त तरीन इलेक्शन करार दिया जा रहा है। तुर्की में 2017 में रेफरेंडम हुआ था और जिसमें यह कहा गया था कि मुल्क में सदारती निज़ाम लाया जाए, जिसके बाद 2018 में पहला सदारती इलेक्शन हुआ और 2023 में ये दूसरा सदारती इलेक्शन हो रहा है पार्लिमानी इलेक्शन के साथ, लेकिन जिसमें रजब तैयब उर्दगान जो के 52.59% वोट मिले थे और वो 2018 का सदारती इलेक्शन जीत गए थे। 2023 के इलेक्शन में मुल्क भर में तकरीबन 5 करोड़ 54 लाख वोट डाले गए, यानी वोटिंग का टर्न आउट जो ये बताया जा रहा है, और टोटल पॉपुलेशन 8.5 करोड़ के लगभग है, जिसमें से 5.5 करोड़ से ज़ायद लोगों ने वोट डाले हैं। जो वोटिंग का टर्न आउट अगर मैं आपको बता सकूं तो वो तकरीबन 87% है, यानी कि अगर तुर्की की तुर्किया को जो देखा जाएगा और उसकी जमहूरी जो तहरीक और सिलसिला है उसको अगर देखा जाए तो तुर्किया उन ममालिक में से, उन डेमोक्रेटिक ममालिक में से एक मुल्क है जिसके अंदर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग और टर्न आउट सामने आता है वोटिंग प्रोसेस के अंदर, यानी कि जिन ममालिक में सबसे ज्यादा लोग निकलते हैं और अपने लिए हक राय दही का इस्तेमाल करते हैं इलेक्शन में वोट के जरिए और अपने कैंडिडेट के लिए, तुर्किया उन ममालिक में से एक है। इसके अलावा रजब तैयब उर्दगान की अगर बात करें तो 2,73,23,000 के करीब बताए जा रहे हैं कि जी उन्हें वोट मिले, जबकि अगर बात की जाए इसमें ऑपोजिशन की जो 6 जमातें हैं उनका जो अगर आप देखें पूरा इसमें जो इत्तेहाद है उसको, तो उसमें तकरीबन 2,49,02,300 के करीब उन्होंने वोट हासिल किए हैं, जबकि जो कौम परस जमातों से ताल्लुक़ रखने वाली और उनकी जमात का नज़रिया ये कि तुर्की से गैर मुल्की तारकीन वतन को निकाला जाए, इस किस्म के लोगों को देखें तो उसमें सनान ओगनान इन इलेक्शंस में 5% के करीब जो है वो वोट हासिल कर सके हैं। महारमंजो को देखें अगर कि एक उम्मीदवार थे, वो इलेक्शन से कुछ दिन पहले ही इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए थे, मगर इसके बावजूद उन्होंने 2 लाख के करीब वोट उनको भी मिले हैं। हैरत अंगेज तौर पर यह भी अगर देखा जाए, ज़लज़ला ज़दा इलाकों में रजब तैयब उर्दगान ने 71% वोट हासिल किए हैं, बावजूद इसके कि वहाँ पे सदी का बहुत ही सख्त तरीन इस वक्त जो है वो ज़लज़ला आया, जिसको पिछले दिनों K21 ने कवर भी किया, आपने देखा हमने वहाँ जाके। तो इब्तदाई तौर पे इत्तलात तो ये थी कि रजब तैयब उर्दगान 60 वोट % हासिल कर लेंगे, मगर कल रात से अब तक सूरत हाल में काफ़ी खासी तब्दीली आ चुकी है और बड़ी दिलचस्प तब्दीली है। तो तुर्की में 99% वोटों की गिनती मुकम्मल हो चुकी है, जिसके मुताबिक रजब तैयब उर्दगान ने 49.4% वोट हासिल किए हैं, जबकि अगर किलिचदारोगलू की बात की जाए तो उन्होंने 44.95% वोट लेने में वो कामयाब हुए हैं। तुर्की में सदारती इंतखाबात के लिए आपको यहाँ मैं ये बताती चलूँ एक इंतहाई अहम बात, वो ये है कि जी आपको तकरीबन जो है 50% वोट चाहिए किसी भी कैंडिडेट को। ये मैं सदारती आपको के हवाले से आपको बता रही हूँ, इलेक्शन के हवाले से। और कानून के मुताबिक तुर्क में अगर कोई भी उम्मीदवार 50% वोट हासिल नहीं कर सकता तो फिर इलेक्शन का दूसरा राउंड होता है सदारती उम्मीदवार की। अभी ये बात हो रही है क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये जो इलेक्शन होते हैं वो 2 फेजेस में होते हैं, यानी कि
साइड बाय साइड पार्लियामेंट्री भी और प्रेसिडेंशियल भी हो रहे थे। तो दूसरा राउंड 14 रोज के बाद यानी कि अब 28 मई को होगा। और अहम बात यह है कि देखना यह है कि जो सनान उगनान है यानी कि जिसकी हम बात कर रहे हैं, कुर्द पार्टी जिसको कहा जाता है, खासतौर पे जो कुर्दों की खासतौर पे डला है और पार्टी, उसमें 5% वोट किसके खाते में ये जाएंगे जो होगा। अच्छा, इसी पे हम बात करेंगे। और ये सारी सिचुएशन बड़ी चूंकि अब इंटरेस्टिंग है, नेक टू नेक कंपटीशन है। और ये जो बड़े ही फेयरस किस्म के, जो फेयरसली किसे कहते हैं ना कि इस वक्त इलेक्शंस हो रहे हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तुर्की से हमारे साथ मौजूद है जी मेहमान, और रिटायर्ड मेजर अकरम महमूद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जी। उनकी तरफ मैं जाती हूँ। ही इज़ अ पॉलिटिकल एनालिस्ट फ्रॉम तुर्की, अंकारा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच मेजर अकरम साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। आई वुड लाइक टू आस्क, आई नो दैट this is a very neck-to-neck competition this time in Turkey, and especially for the election of presidentship. So, however, so Turkey is fiercely this contested presidential election appears likely to go to a second round, as I had said earlier in my introduction as well, after neither President Recep Tayyip Erdogan or nor his main rival Kemal Kılıçdaroğlu secured 50% vote. So is it Turkey's most fiercely contested and tightest election, we say? Yes, Rida, absolutely, you're right. And this is one of the most tight contested election, and it is going to be decided on the 28th of May this month. And hopefully, Erdogan is actually very close, because he only need 500,000 extra vote to become 51%. So just to correct you that our president need a 51%, not 50%. So the Erdogan need only 500,000 votes. So it is much easier to get 500,000 than the 2.5 million. So the other Kılıçdaroğlu should be able to get 2.5 million vote to become like the number one in the race, and then he should get 51%. So now, out of the two candidates, anyone who wins the election, he will be the next president. Okay, right. So, so many factors we are actually watching that are included in these presidential and parliamentary elections side by side. As we know that about 1 million Turkish expats have voted in the presidential election, with the turnout highest amongst those living in Germany, Canada and the US also. According to the state-run Anadolu agency, it is upstick in overseas voters delaying results, which we have seen last night. Yes, the result was delayed not because of the overseas voters, but because of the couple of villages and places which are little far away from the cities. So that was the reason the result was delayed. But it was announced like before midnight. So it was not only the overseas voter, but the a couple of places which are quite far away. Plus there are some places has the earthquakes and there's roads are also affected. So it was a number of factors which delayed, but it was announced before midnight. All right. I would also like to ask that Turkish inflation is also the very important factor in all these elections we were hearing in the last few months. We've seen that Turkish inflation stands as a 44%, and the country is reeling from devastating earthquakes of February, and which we have also covered as well. How these factors are shaping outcome of Turkey's presidential elections especially? What do you see? Actually, when you see our president Tayyip Erdogan, so he has only one drawback, which is inflation. Otherwise, as we all know, that he is one of the most famous and one of the most powerful leader in the history. So the only drawback, the only thing which hurts the presidential election and his party, which is the very, very high inflation. But I hope that if you see, it is going to be controlled. And for last 6 to 8 months, we can see the Turkish lira has getting little stronger, and it is quite steady, not falling down like before. We say last year it was going like 20%, 25% in 2-3 months. So it is basically getting stable, and that is the only thing, inflation, which is basically hurting the
AK Party President Erdogan. Otherwise, he has absolutely rest of the thing, the management, the justice system, the administration system, everything is basically people appreciate. But that is, you are absolutely right. Inflation is the one which is hitting the AK Party and the President Erdogan. Okay, I would also like to ask that we have seen 64 million Turks has casted their vote in these elections recently, and out of them 5 million about of those who were first time voted in these elections, who are aged between 18 to 22 years. So what will the young voters, I mean, what were the young voters inclined towards? How did you see it? And who, of course, who may not care about the political problems of the past as well, I guess, because they are with their new ideology and with the new blood and with the new energy. So, what were the tilt or what were the shift of those 5 million youngsters you have seen in this election? Yes, Rida, you're absolutely right. But these youngsters, they don't go like at their own mostly, because if you see the conservative, which is the AK Party, so those people, they are going through the family system, going through the, their villages, and, it is a trend in that area. But if you talk about the city people, mostly they are independent. So the young guys can decide at their own. And if you see the major cities, all the cities, they are won by the Kishtar Daroglo, not the AK Party. So it is going against the Erdogan. But if you see the people who are youngsters who are coming from the village, so the vote, mostly the votes are going to the same, like, let's suppose a province or a city, it is already inclined towards the AK Party. So they are all people going to the AK Party. So they are not deviating away from the family system or the family support. So they are going as a family, but in the cities, they are not going as a family, they are going independently. I see. I would like to ask the very last question from you. That we have seen that there are two alliances. One is Democratic Alliance, which is leading by the AK Party, which is Justice Party, Democratic Justice Party of Rajab Erdogan, and the another one is Millet Ittifaqi, which is called the Millet Alliance. And what do you say that in this presidential neck-to-neck election and tough challenge, which is going to be in the second round as well on 28th May? So how do you see that where would be the incline of these other alliances, especially like we see that Yasir group and the other Kurd groups which are having the votes, number of votes in their hands as well? Rida, those people, Yashil Soul means the Green Right Party, already voted in the favor of Kemal Kılıç Daroglu, and that is how he got the 44.89% vote. And mostly these Kurd people, they are living in the place called Diyarbakir. Diyarbakir, the Millet Ittifaqi already got 82% vote. So there's no more risk that they are going to vote to anybody else. And already those are decided, but now the decision making is the third presidential candidate, which is Sinan Ogan. Sinan Ogan has taken 5.17% votes, and these votes are basically going to decide. And this guy has taken almost 2,829,000 votes, and he formed an alliance called Ata Ittifaqi, which means the Ataturk Alliance. And this is the only vote which are 5.17% vote are going to decide. And if you see the President Rajab Erdogan, he only need 500,000 votes, but the other contestant, Mr. Kemal need 2.5 million votes. So it seems to me that Mr. Rajab Erdogan will be winning the race. But we cannot say with the guarantee or with the surety, but it seems that the margin which is required by the AK Party, which is very small, and the vote required by the other party, which is CHP, or we call JHP, which is really quite a huge number, which is 2.5 million.
and the votes are in the hand of Mr. Sinan Ogan are 2.8 million 30,000. So I personally feel that President Rajab Erdogan would be winning this race, but like it is really very, very tight, and this is very, very you can say close race. So we cannot say with the 100% guarantee, but it seems that President Erdogan would be winning. Okay, thank you so very much, Major Retire Akram. We have with us, and we were taking his opinion and analysis on the current पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। और बिल्कुल नाजरीन, इसमें जो अहम चीज़ है जो बता रहे थे वो कि जी जो थर्ड कंटेस्टेंट है सिनान ओगान, जिनके पास 5.2% वोट है थर्ड नंबर पे, अब उनके वोट किसके खाते में जाएंगे? या तो वो रजब तैयब एर्दोगान साहब के खाते में जाते हैं या फिर वो कमाल दारोगलो के खाते में जाते हैं। ये इस वक्त दुनिया की नजरें हैं 28 मई तक। वेल, कमिंग बैक टू आवर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जी, अपनी जो हमारी यहाँ पॉलिटिकल पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिक्स है उसकी तरफ आएंगे जी, और उस पर बात करेंगे। और वो इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार भी है, और बहुत ज़्यादा जो हमारी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है वो इस वक्त उसमें बहुत सारे अप एंड डाउन्स हैं। ना सिर्फ अप एंड डाउन्स है बल्कि इसके अंदर जिन हालात में आज घर घिरा हुआ है इसके नताइज से सभी परेशान है। लेकिन इन सियासी हाथियों की लड़ाई में अवाम पिस रही है। देखा जाए तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अवाम का नुकसान हो रहा है सबसे ज़्यादा। बज़ाहिर कोई सियासी रहनुमा किसी तौर पर मफाहमती रास्ते पर आने को तैयार नहीं होता दिखाई दे रहा। और अब तो नौबत यहाँ तक आ गई, खुले आम अदलिया पर तनकीद की जा रही है। अदलिया के दरवाजे फैलांग कर आज जो है वो रेड जोन में और पार्लियामेंट के अंदर दाखिल होने की कोशिश की गई है। कल ख्वाजा आसिफ ने अदलिया पर हमलों के हवाले से, जो कि आज उन्होंने किए भी हैं, क्या बात की है आइए सुनते हैं। पावर्स एक्सीड कर रहे हैं, जो अदलिया को पावर दी गई है, आइन ने दिया है, उसके तजावुज कर रहे हैं। और हम जो है, जो हमें पावर तस्वीर की है, हम उनको उस तरह एक्सरसाइज नहीं कर रहे जिस तरह वक्त की जो है जरूरत है। हमें ये हक पहुंचता है, आइन ये हक देता है। जनाबे वाला, इस मुल्क के 22-23 करोड़ अवाम ये हक देते हैं। मैंने उस दिन आपको कहा था कि एक कमेटी बनाएं, आज भी ये कमेटी बनाएं कि 4 लाख मुकदमे इनके आगे जो है पाकिस्तानी अवाम के पेंडिंग है। ये फरमाइशी प्रोग्राम जो है रोजाना शुरू कर देते हैं और उन 4 लाख मुकदमों का कोई पता नहीं जी। और जी कहा जा रहा है कि जी कमेटी बनाएं और ये करें, ये तो कुछ भी नहीं। आज जो अभी अब से कुछ देर पहले जो है मरीम नवाज साहिबा ने और मौलाना फजल रहमान साहब ये से कुछ देर पहले खिताब कर रहे हैं, और जो बातें जिस रंग की हो रही हैं मुल्क के अंदर, अदलिया को अब इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है। और ये कोई पहली बार नहीं है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत माजी में भी हमें इस तरह के काम करते हुए नज़र आती रही है, और हमने ये देखा है कि किस तरह से जो है वो उन्होंने अदलिया को माजी में भी तनकीद का निशाना बनाया। बट बिफोर गोइंग टू माई गेस्ट जी, मेरे पास इस वक्त मंसूर आजम काजी हैं, एंकर पर्सन है, तज्जियाकार हैं, निजी टीवी चैनल पे एक ज़बरदस्त प्रोग्राम करते हैं जी, और साथ नवाब तहबूर तालपुर हैं, सूबाई वजीर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सिंध से। बट बिफोर आई गो टू बोथ ऑफ देम जी, मैंने एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पर जाना, उसके बाद वापस आ रही हूँ, आपने कहीं जाना, स्टे ट्यून्ड।